डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर, लेकिन किशन का बेटा क्यों किशन बनना चाहेंगे? हो सकते उसका बाप दादा किशन में फेंकते, तब महंता कहाँ जाते? सर, last year the government claims record output of food grains, but actually soon they did ban the export of wheat and paddy, and the public in the street had to buy the food grains at ever increased prices. The total budget allocation of natural farming over last 3 years budget comes to rupees 746.19 crores only. Budget is talking the natural farming, but country government unnatural substances. The economy survey notes expected growth in the agriculture sector in 3.8%. Interestingly, State of Indian Agriculture 2015-16 by Ministry of Agriculture informed that decade back India had the annual average growth rate of 5% in the agriculture sector. Sir, are not the life and contribution of sharecroppers to be counted important? If my state West Bengal can include its sharecroppers under West Bengal Kishak Bandhu schemes, therefore what stops Pradhan Mantri Kishan Samman Nidhi योजना include करने के लिए क्या problem है? ये remains a mystery as well a pathetic decision. Sir, we need to be serious and concerned about the distress of farmers. Perhaps due to having such poor understanding on farmers' problems in the budget PMFBY, the crop insurance scheme has got a cruel cut-off to 23%. PMFBY charges premium from the enrolled farmers. In West Bengal, the state-run Bangla Shosho Bima schemes is a fully state government funded schemes for which enrolled farmers need not pay any premium. Annually 6,000 crore खर्च होते हैं स्टेट के लिए. 109 लाख फार्मर्स एनरोल हुआ है नया, जो ममता बनर्जी के सरकार दे रही. 18 से 60 तक अगर उसी एज में कोई किसान मर जाए, उनके लिए ममता बनर्जी 2 लाख करके देते हैं. सर, ममता बनर्जी के बहुत सारे स्कीम्स है, जिसमें एक लक्ष्मी भंडार जो 2-4 स्टेट उसको फॉलो किया. अगर ये स्कीम भी सेंट्रल फॉलो करे, इसमें कोई बुराई है नहीं, कोई शर्म है नहीं, कोई ईगो है नहीं, कर सकते हैं. फर्टिलाइजर आर क्रूशियल फॉर फार्मर्स बिकॉज इट कवर्स all economics aspects, and the wisdom of government not only cuts fertilizer subsidy in the budget but also remained insensitive with the supply of fertilizer. As an example, West Bengal used to get a specific grade of NPK to the tune of 4.50 lakhs MT in 2021. The pathetic fact is, in 2024-25, the quantity of supply of the same grade was reduced to 1.33 lakhs MT. The mentioned cut in supply by the union government thus compelled the farmers of Bengal to buy high prices phosphate and potash fertilizer. 1.07 लाख MT सप्लाई करने का बात था जनवरी 2025 में. जनवरी चले गए, फरवरी चले गए, अभी मार्च भी जाने वाला है, अभी तक वहाँ पे मिले नहीं. अभी तक वेस्ट बंगाल में किसान के पास फर्टिलाइजर पहुँचे नहीं. सर, बहुत किसान हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल भर बॉर्डर में पड़े हैं. डे बिफोर यस्टरडे उन लोगों को निकाला है. मुझे ये लगता है जो आंदोलन करते हैं उनको पता है हक मिले ना मिले, लाठी का डंडा का मार तो मिलेगा, फिर भी वो लोग रास्ते में बैठते हैं क्योंकि फिर जिंदगी का सवाल होता है. मैं ये भी सोचती हूँ, जब जिनके पास ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का हक होता है, जिनके पास ये पावर होता है, वो जब घर में खाना खाते हैं ऐसे रूम में बैठ के, शायद कभी ना कभी उस किसान का बात याद करते हैं जो रास्ते में पड़े हैं, जो फैमिली नहीं है. अभी जूट के बारे में सर, मैं एक ही हूँ मेरा पार्टी के आज, तो मैं नहीं है सर, नहीं है.
मैं बोलती हूँ, नहीं है वो दुख चले गए, मैं एक ही हूँ। जूट के बारे में बोलूँ, West Bengal leads in jute production in the country. Unfortunately, jute industry is facing challenging due to the policy of Government of India in decreasing the demand in jute bags and eco-friendly packaging material. Budget has not produced any direction to jute production and schemes for assured price to farmers. Sir, lakhs of families are dependent on jute industry and stand as a perfect example of how the policy making of union government is apathetic with the farmers. West Bengal, India's largest jute producing state, accounts for 70 of the country's 93 jute mills. The union government has increased MSP to rupees 5,650 per quintal from rupees 5,335, but fact says that due to low demand from purchasers, including Food Corporation of India, the price went as low as rupees 5,000 per quintal last year. Country's production of raw jute has dropped by over 29% in the past decade. पता है सर, टाइम कम है और हम लोग अपोजिशन में भी हूँ, सरकार का गलती बोलते हूँ, झूठ जो है वो सच क्या है वो भी बताते हूँ, इसलिए टाइम और भी कम हो जाते। यह भी पता है तारीफ करने से, वाह वाह करने से टाइम ज़्यादा मिल जाते। एनीवेज, मैं एक स्टोरी बता के ख़त्म करना चाहती हूँ। ये स्टोरी भी नहीं है, एक इंसिडेंट है, एक रियलिटी है हम लोग का देश का। मैं एक जगह पे गई थी, जगह का नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि लोग चीखने चिल्लाने लगेंगे। वहाँ पे कोई बच्चे खेल रहे थे, कुछ बच्चे, उनसे देखने से पता चलता है वो गरीब है, किसी का शर्ट नहीं है, किसी का पैंट नहीं है, किसी का चप्पल नहीं है, और घर भी देखने से पता चल रहे थे वो गरीबी है। तो देखा एक बच्चे के हाथ पैर में कुछ रैशेस थे, स्किन डिजीज जैसा। मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला ये क्या हुआ? बोला पता नहीं। मैंने बोला ये स्किन डिजीज है, डॉक्टर के पास गए थे? बोला नहीं, उनके पास तो डॉक्टर बहुत दूर की बात है, कुछ होते थे माँ शायद कोई लगा देते, हल्दी चरण ये सब, लेकिन वो फिर भी बोला नहीं। फिर मैंने बोला तुम नहाते नहीं हो? क्योंकि पता है बच्चे लोग नहाने से भागते, और जो मिट्टी में खेलते शायद वो मिट्टी कीचड़ उसको लगने से वो स्किन डिजीज हुआ। मैंने फिर से पूछा नहाते नहीं हो? तो बोला नहीं। मैंने बोला देखा ना इसलिए होते। फिर मैंने क्यों नहीं नहाते हो? बोला नहाने के बाद ज्यादा भूख लगते हैं। सोचिए अगर नहाएंगे तो उसको ज्यादा भूख लगेंगे और भूख लगने से खाना नहीं मिलेगा, इसलिए वो लोग नहीं नहाते। मैं ये वो सुनने के चुप हो जाए, इसलिए मैंने बोला जगह का नाम बोले सब चीखने चिल्लाने लगेंगे आप लोग। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। अगर उस टाइम मैं सुन के मैं चुप हो गई हूँ, मैं इसीलिए बोला ये बोलने से ये चीखेंगे, ये चीखना चिल्लाना इसीलिए ये देश का है। लेकिन मैं उस दिन वो सुनने के बाद चुप रही, लेकिन मैं ये बात करूंगी सरकार को, ये सुनने के बाद प्लीज आप लोग चुप मत रहे, कुछ कहे कुछ करे, ऐसा चीखना नहीं, काम करना है। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर्स, श्री टी.एम. सेल्वा गणपति जी। So thank you, sir. Sir, I am proud to be a fifth generation farmer. Sir, I on my behalf of my party, Dravida Munnetra Kazhagam, raised to oppose this demand, number 1 and 2 pertaining to the Ministry of Agriculture. So my first and foremost objection, because of the paucity of time, try to put it in a nutshell. Many have lost their life in 20s braving the hot sun and the cold, the border of Delhi. Expected something from this government to be done. The government also has made promises. I oppose this demand because
the grant given to this ministry is not meant to fix the legally guaranteed minimum support price for crops, which has been the dream of 70 crore agrarian population of this country. The much expected National Commission for Farmers formula of C2 plus 50% for all crops is missing. Then the second foremost objection is, this does not speak a word about the waiver of loan for almost 18 crore farmers who are debt-trapped in this poor agrarian economy. And also, what about the much-awaited comprehensive insurance scheme? The scheme which we have now doesn't even compensate the cost of the seeds, leave alone the other inputs to the agriculture operation. Sir, more than 200 have died. This government has made several promises to end the strike. None of them have been fulfilled, not even attempted to be fulfilled. Sir, even our parliamentary committee, the Standing Committee on Agriculture, which is supposed to be the mini parliament, where the ruling treasury benches MPs and the opposition are there, have unanimously given a report that this MSP had to be given to end the lakhs and lakhs of farmers' suicide in this country. The menace, which has been continuing right from the almost 10 years, 1,11,000 farmers have ended their life because of misery and the debt trap that they have been undergoing. Sir, the committee gave a report with regard to waiver of loan. More than that, the famous Dr. M.S. Swaminathan's committee, National Commission for Farmers, which has given a holistic approach to, give a boost to this economy, agriculture economy, has been put in cold storage. The farmers are not given proper cold storages. Rather, this government is putting all the committee report, including the standing committee report, into cold storages, because the rural voters have not voted for this regime. Is their fault? So, whereas you look at the corporate loans that has been waived, how this regime is pro-corporate is evidenced by the fact that an answer to the question by none other than the Honorable Finance Minister, in 22-23, 2,16,324 crores have been written off. 23-24, 1,70,270 crores. 2014 and 2015, 58,760 crores have been written off. In 2018 and 19, almost 2 crore, 36,265 crores have been written off for the very small group of corporates in this country, which is deplorable. If you look at the amount of money that has been, the public money that has been written off, was almost 16 lakhs and 35 crores for the corporate sector. Whereas 70 crore of this population, country's population, what we eat, the rice, the chawal and the roti, is the blood and sweat of our farmers. Their long pending demand has not been taken. Look at the contrast, sir. After the assumption of our Dravidian model of government in Tamil Nadu, our octogenarian dynamic leader, Honorable M.K. Stalin, has waived the farmers' loan to the tune of nearly 12,110 crores, benefiting 16.5 lakh farmers, and almost dispersed crop loan of 54,800 crores, half of your budget, for almost 67 and 81,000 lakh farmers of the state. The interest subvention, sir, it is 0%. Compared to the center, it is 3% where the farmers have to sell out. At the same time, in order to meet the short-term agriculture loan also, credit, the crop loan to the tune of 17,000 crores
will be provided in this year alone in the state of Tamil Nadu. The capital loan for livestock is almost 7,000 crores to 12 lakh, 24 lakh farmers who have been advanced with the monumental livestock loan. Because all these measures, sir, now the Tamil Nadu stands first in the poverty alleviation program among all the states compared to the states in the Indian country, because we have a separate budget for agriculture, which no other state has got. Therefore, almost even the pump sets, the free pump set, for this year alone we have given about 2 lakh pump set, which no other state have come. Why I am raising all these issues, sir? The central government may take a cue and follow the model of Dravidian model that would benefit the 60 crore population. So the finance minister in the budget speech had categorically said key driver for the growth and the Viksit Bharat is the first engine of growth is agriculture sector. So it is a hypocrisy. What you have allotted, an enormous budget of 56.75 crore, you have allotted a pittance of 1.77 lakhs crore, which is almost 2.07% compared to the revised estimate of 2014 and 15. Sir, your Viksit Bharat scheme would derail. The first engine would derail if you look at agrarian economy in this fashion. Therefore, what you utter is meaningless. That this is the first engine of growth for attaining to accelerate the growth for the Viksit Bharat in the year 2014. Therefore, sir, look at even the fertilizer department had reduced the allocation from 1.83 lakhs to nearly 1.53 lakhs, almost 26,500 crores is missing, which will bear a very bad impact on the subsidy of the fertilizer. Sir, in agriculture, what is needed is the capital investment, which is absolutely neglected by this government. If you take the statistics from 2021, which is coming down from 4.83%, now this year it is 3%. If there is no capital expenditure, how do you think the finance minister or the agriculture ministry seems and depicts that the agriculture is the first engine of the growth for obtaining the Viksit Bharat? Sir, for a country of 70 crore, if this is the allocation, which is deplorable, sir. Sir, this house is well aware of the fact India was dependent on PL 440 from the United States of America for importing wheat. Thanks to the Green Revolution by our forefathers, especially Dr. M.S. Swaminathan and Dr. C. Subramaniam, who hails from our state, now this government trying to reverse the trend that was set earlier, where we were not absolutely stopped depending on importing wheat from the United States of America. Now, very alarming situation is the government would allow duty-free import of American agriculture and dairy products. Even our Commerce Minister gone on record in the press that they are going to allow and given a nod to duty-free import of American food grains and dairy products. Sir, no less than a person, the President of the United States, Trump has gone on record that India has agreed to conditions stipulated by the United States of America. Sir, the Mexico, the China, and even the European countries are resisting this. We have become spineless. So this will absolutely give a death knell to our farmers. There will be huge dumping when we allow a free, duty-free import, sir. There is going to be a massive dumping, sir. Therefore, the government, the Honorable Prime Minister would revisit, because this will completely achieve the Viksit Bharat. Sir, agriculture is a state subject. Therefore, this government should allow the state to frame its policies, and centralized policy and planning should not be thrust upon, because the farming differs from soil to soil, state to state, and climate to climate. This diverse position of the agrarian farming, we don't understand. Therefore, the problem exists that it should be given up
on one count. Thank you, Sir, the honourable member. insurance Thank you. coverage. Sir, I'm the Please only conclude. speaker in my party. No, you have already 10 minutes here. Sir, please, sir, please, sir, please. There are some Please state conclude. subject. Conclude. Sir, the insurance coverage to agriculture, even that has been reduced in the agriculture allocation from the general budget. Almost 3,000 crores has been decreased from the earlier year. In Tamil Nadu, there are 14 lakh farmers for an area of 34 lakh acres have registered in crop insurance. Sir, the state contribution has been completely paid, around 220 crores, but the center is still to give because they have given a pittance of 70 crores. Almost 142 crores have been pending for months together, sir. This is one demand. And the other one is to strengthen the agriculture infrastructure. We have been demanding the cap on the interest subvention is only 2 crore. What we want is that should be increased to 20 crores so that the larger investment would be there and the private parties to be investing more on agriculture to strengthen our infrastructure, sir. The another PM's flagship scheme is PMKSY, sir. That is, we call it the Command Area Development and Water Management for irrigated areas. Almost about 27 projects are pending for an area to cover 83,125 hectares, sir. For an outlay of 587 crores, that's been pending from 2018 to 19, sir. If this is the way the government of India is dealing with the Thank you, projects of honourable the member. agriculture, Thank you. sir. Please Sir, conclude. Sir, the E-norm, which is very, very important, the Honourable Minister is there. Almost about our state, 157 markets have been now integrated with the E-norm and another 57 to be integrated. Sir, the problem is that the farmers who have registered themselves in E-norm is facing enormous problem because of the server issue, where if they, in the gateway itself, the commodities does not appear, therefore they have to wait in a long queue. And the Okay, payment thank you. takes months. No, Sir, ma'am, the thank payment you. takes months. Please conclude. Month time, sir. No. Becomes a Please major conclude. issue where law and order problem is there. We have been writing them. Earlier the E-norm payment was Okay. 80% in our state. That has come down to 50%. Honourable sir. member With D. the government Prasad of India. Rao ji. Sir, one more minute. One D. more. Prasad Rao ji. No, sir. No. Complete. D. Prasad Rao ji. You start, please. Mike. Honorable Speaker, I rise today to discuss the demand for grants for agriculture for 25-26 under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman. The Union budget reaffirms its commitment to farmers' welfare with a 3.89% increase from the previous year. It introduces new schemes to strengthen India's agriculture sector. Today, I would like to talk about the three critical pillars of the agriculture: the farmer, finance, and the future. These fundamental components shape the policies that will definitely define the destiny of our agrarian economy. The farmer. The PM Kisan scheme has been game changer with over 3.46 lakh crore disbursed to 11 crore farmers across the country in 18 installments. In Andhra Pradesh alone, 836 crores has been transferred to more than 41 lakh farmers. However, there are two areas where we can further enhance this initiative. Over 50% of the Andhra Pradesh agriculture workforce comprises tenant farmers. Recognizing them under PM Kisan will ensure equitable benefits. The state government under the Chief Minister Nara Chandrababu Naidu has already promised recognizing for tenant farmers through the Tenant Farmer Protection Act, and I urge the centre to come up with a similar initiative. The second one, PM Kisan launched in 2019. The scheme provides 6,000 rupees per year. Given the successful implementation of over 6 years, I urge the government to increase this amount to account for inflation and ensure greater financial security for our families, farmers. Finance, second, the finance. The major achievement of this government has been the exponential rise in the institutional credit flow to agriculture from 8.5 lakh crore in 2014-15 to 25.48 lakh crore in 23-24. This year, unit budget has further reinforced the commitment by increasing the Kisan credit card loan limit from 3 lakh to 5 lakh. However,
a critical challenge remains informal lending. Nearly 30 to 40% of farmers still rely on private money lenders due to stringent CIBIL score requirements for agriculture loans in some banks. This must be addressed. Farmers should not be denied access to formal credit based on the credit scores. A foolproof implementation of relaxed credit norms will ensure more farmers can benefit from the institutional loans and break free from the high interest informal borrowing. The third pillar is future. As the global food demand surges, the quiet yet profound shift is underway. 2 out of every 5 Indian workers have moved away from agriculture in the past 3 decades. How do we secure our agriculture future? The answer lies in agri-tech. Encouraging agri-tech startups and implementing modern technology-driven solutions will enhance productivity, efficiency, and profitability for our farmers. A visionary approach to revolutionizing agriculture could follow the model of one family, one entrepreneur introduced by Honorable CM Nara Chandrababu Naidu garu in Andhra Pradesh. At the national level, this could be one farming family, one agripreneur, ensuring entrepreneurial growth in rural households while securing India's agriculture future. Now I would like to highlight 3 critical initiatives in Union budget. That is Cotton Technology Mission and the National Mission for High Yielding Seeds. These 2 will encourage the agriculture in this country. And further, one point that troubles in the Andhra Pradesh in Chittoor district is the mango. Honorable Speaker, Andhra Pradesh is a significant mango producing state in India, with districts like Krishna, Chittoor and Godavari regions known for mango cultivation, particularly the Banganpalli variety, and the production of around 45 to 50 lakh tons annually. And the Totapuri is produced from Chittoor district. And everywhere it is domestic purpose, and Chittoor district produced for the pulp purpose. I think this mango producer farmers are facing problem now. So I would urge the government to support mango farmers who are experiencing a crisis due to lack of remunerative prices for their produce as a result of adverse climatic conditions for mango production. There is an urgent need to extend more support to the mango farmers and mango-based industries in Chittoor district. Being a member of Parliament Lok Sabha, I have already given a representation to the Honorable Agriculture Minister regarding to set up a national mango board to curb all the issues relating to mango, and which will give the constitutional platform to address much required initiative for the sake of farmers. Thank you. And further, one more issue, sir, and there is for export there is a hurdle in European countries, and one hurdle is Ukraine war, where we are not able to export the pulp, and one hurdle is in European countries where they charge more import duty for India compared to the proportionate to the other countries. So I urge the Ministry of Commerce to look into this matter. Thank you very much. Well, thank you. माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार जी. धन्यवाद सभापति महोदय. आज मैं भारत सरकार द्वारा 2025-26 के लिए पेश किए गए बजट में कृषि संबंधी अनुदानों और मांगों पर अपनी बात विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं. महोदय, सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है. माननीय वित्त मंत्री ने देश के विकास के लिए पहले इंजन के रूप में कृषि को मान्यता दी है. इस बजट में भारत सरकार ने कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और कम ऋण उपलब्धता वाले देश के 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसका मैं स्वागत करता हूं. इससे उन जिलों में फसलों की उत्पादकता बढ़ने और ऋण की उपलब्धता बढ़ाने में किसानों को काफ़ी मदद मिलेगी. मेरी मांग होगी कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले को भी प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना में शामिल किया जाए. बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है. बिहार सरकार ने अपना चौथा कृषि रोड मैप प्रस्तुत किया है, विजन स्पष्ट किया है. इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को हृदय से बधाई देता हूं. महोदय,
मखाना बिहार का एक प्रमुख खाद्य उत्पाद है। मखाना के उत्पादन, विपणन, किसानों के प्रशिक्षण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा से बिहार वासियों में काफ़ी खुशी हुई है। इससे बिहार के उस उत्पादन को देश विदेश के कोने कोने में पहुंचाने में काफ़ी मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मॉरिशस दौरे में इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिखाई दिए, जिससे बिहार वासियों का दिल जीत लिया है। राष्ट्रीय उच्च पैदावार मिशन, मत्स्य उद्योग को प्रोत्साहन और कपास उत्पादन मिशन के जरिए भारत सरकार कृषि को एक नया मुकाम देने के लिए प्रयत्नशील है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को मिलने वाली ऋण सीमा में वृद्धि कर महत्वपूर्ण सहायता उपलब्ध कराने का जो निर्णय लिया है, कृषि सुधार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इस निर्णय के तहत कृषि, मत्स्य और डेयरी के प्रोत्साहन के लिए किसानों को ऋण की राशि 3 लाख से 5 लाख तक की गई है। लेकिन कुछ किसानों को केसीसी प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही है, क्योंकि आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने और बैंक की प्रक्रियाओं में पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। यह प्रक्रिया आसान करने की मेरी सरकार से मांग होगी। और केसीसी पर ब्याज दरें और अन्य योजनाओं की तुलना में अधिक होती है, जिससे गरीब किसानों को अधिक खर्च करना पड़ता है। इसे भी कम करने का मेरा सुझाव होगा। केसीसी प्राप्त करने की प्रक्रिया कुछ जटिल होती है, जिससे किसानों को परेशानी होती है। साथ ही किसानों को केसीसी के माध्यम से समय समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे कि अपने फसलों की बुआई और अन्य कृषि गतिविधियों को समय पर शुरू नहीं कर पाते हैं। कुछ किसानों को केसीसी के बारे में प्राप्त जानकारी नहीं होती है, जिससे उनका लाभ नहीं पाते हैं। इसलिए भी व्यापक जन जागरण अभियान चलाना होगा। इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार और वित्तीय संस्थानों और किसानों को केसीसी के जागरूक करने, ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए और ऋण की राशि बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर गन्ना का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जहां 4 चीनी मिलें हैं। मेरी सरकार से मांग होगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र बगहा में कृषि विज्ञान केंद्र और गन्ना अनुसंधान केंद्र खोलने की स्वीकृति दी जाए, ताकि इससे स्थानीय किसानों को उन्नत खेती करने में सहूलियत हो सके। थरवट क्षेत्र का संबंधित सुगंधित बासमती चावल और आनंदी चावल को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, आलू आदि फसलों पर आधारित प्रसंस्करण यूनिट भी स्थापित करने का मेरा सरकार से अनुरोध है। किसानों पर राष्ट्रीय आयोग 2006 ने सुझाव दिया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित लागत से कम 50 अधिक होनी चाहिए। मंत्रालय ने 2018 में उस सुझाव को मंजूर किया। सभी खरीफ और रबी फसलों को एमएसपी को भी बढ़ाया गया, ताकि उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी की भी तय करता है। मेरी मांग होगी कि फसल उत्पादन में किसानों की भारी लागत को देखते हुए समय समय पर गन्ना, धान और गेहूं की एमएसपी में उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को केवल वे किसान शामिल है जिनके पास खेती योग्य भूमि है। इस योजना में कृषि मजदूरों को भी शामिल नहीं किया गया है, जो देश के कृषि श्रमिकों के 50% हिस्सा है। खेतिहर मजदूरों के पास जमीन नहीं होती है, वे दूसरों के जमीन पर बटाईदार खेती करते हैं और मजदूरों या फसलों के हिस्से के माध्यम से आय अर्जित करते हैं। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, भूजोत के टुकड़े टुकड़े होने और खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ने से कृषि उत्पादक प्रभावित हो सकती है। भारत के कृषि क्षेत्र में सीमांत और छोटी भूजोतों की संख्या बहुत अधिक है। भूजोत के छोटे छोटे टुकड़ों के कारण किसानों को फसल उत्पादन में अधिक लागत आती है। पूरे देश में चकबंदी कानून लागू कर इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। बिहार में इसे फिर से शुरू करने की जरूरत है। बिहार सरकार ने नए प्रावधानों के साथ साथ बाजार समिति की व्यवस्था शुरू करने का विचार किया है, जो सराहनीय कदम है। बिहार में उचित बाजार नहीं होने के कारण किसानों को उपज के उचित मूल्य नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें विपणन और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के कमी के कारण कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय क्षेत्र में अच्छी बातें बिहार के बारे में रख रहे हैं, चुनावी वर्ष है, अच्छी बातें रख रहे हैं। हमारे संसदीय क्षेत्र के निजी चीनी मिल मालिकों को मोनोपोली के चलते लोग परेशान हैं। इनके द्वारा पर्ची वितरण में धांधली और घटतौली की शिकायतें आम रहती है। आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार के उपक्रम एचपीसीएल की एक चीनी मिल यूनिट मेरे संसदीय क्षेत्र गंडक पार धनाज क्षेत्र में लगाई जाए, ताकि यहाँ के किसानों को निजी मिल मालिकों के शोषण से बचाया जा सके। साथ ही साथ आपसे अंत में निवेदन पूर्वक मेरे संसदीय क्षेत्र गंडक पार उस पार वहाँ पर केले की भी खेती प्रचुर मात्रा में होती है। यहाँ भी
उनके नए तकनीकी और बिक्री हेतु एक व्यवसायिक केंद्र केला के लिए बनाया जाए, जिससे कि यहाँ के किसान अपना केला विदेशों में बेच सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस आपके बजट पर अपना समर्थन देते हुए अपने पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री संजय जाधव जी। धन्यवाद सभापती महोदय। मी 2025-26च्या वार्षिक कृषी विभागाच्या मागण्यावर बोलण्यासाठी उभा आहे। मी आपल्या माध्यमातून सरकारचं या ठिकाणी काही महत्त्वाच्या विषयावर लक्ष वेधू इच्छितो की शेतकऱ्यांचा उत्पादनाला लागणारा खर्च आणि त्याला मिळणारं उत्पादन आणि त्याला मिळणारा भाव, ह्या सगळ्या तिन्ही गोष्टींमध्ये जर विसंगती बघितली तर शेतकऱ्याची आज अवस्था अशी आहे की माय जेऊ घालीना आणि बाप भीक मागू देईना अशी परिस्थिती या शेतकऱ्याची झालेली आहे। अशा परिस्थितीमध्ये आपण ह्या ठिकाणी एकीकडे शेतकऱ्याला वेठी धरता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचं या ठिकाणी असं म्हणणं होतं की शेतकऱ्याचं आम्ही उत्पन्न दुप्पट करू, पण दुप्पट तर केलं नाही, पण शेतकऱ्याला 500 रुपये सन्मान योजनेच्या नावाखाली दिल्या जाते आणि शेतकऱ्याच्या मालाला मात्र कुठलाही भाव दिला जात नाही। अशा परिस्थितीमध्ये अशी एक मराठीमध्ये म्हण आहे, भीक नको पण कुत्रा आवर, अशी म्हणण्याची वेळ सर्वसामान्य शेतकऱ्यावर आलेली मी या ठिकाणी आपल्याला या निमित्तानं सांगू इच्छितो। शेवटी हा विषय खूप महत्त्वाचा आहे। शेतकऱ्याच्या सिव्हिलच्या बाबतीत असेल, शेतकऱ्याचा सिव्हिल कोरा झाला नाही म्हणून त्याला बँक कर्ज देत नाही। शेतकऱ्याच्या शिक्षणाचा विषय असेल, शेतकऱ्याच्या मुलाला शिक्षण घ्यायचे, त्याच्या शिक्षणासाठी कर्ज दिल्या जात नाही। पण ह्या देशामध्ये अनेक उद्योगपतींनी देशाचं कर्ज बुडवून ह्या सरकारला अडचणीत आणण्याचं काम केलं, त्याच्याकडे सरकार गांभीर्यानं घेत नाही। परंतु माझ्या शेतकऱ्याला कुठं अडचणीमध्ये मदत करायची त्यावेळेस मात्र हात झटकून सरकार मोकळं होतंय, ही एक वस्तुस्थिती सांगावीशी वाटते। मी आपल्या माध्यमातून पुन्हा एकदा मंत्री महोदयाच्या एका महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधू इच्छितो की ह्या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये सप्टेंबर महिन्यामध्ये अतिवृष्टी झाली, ढगफुटी झाली आणि ह्या काळामध्ये सरकारनं त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला एक विमाच्या अग्रिम बोनस, अग्रिम विमा देण्याचं कबूल केलं, पण अग्रिम विमा आज 6 महिने झाले शेतकऱ्याला आणखीन 335 कोटी 90 लाख रुपयाचा अग्रिम विमा मिळाला नाही। ही या देशाची शोकांतिका आहे। एकीकडे कंपन्या ह्या विम्याच्या माध्यमातून गब्बर झाल्या, पण शेतकरी माझा आज उपाशी आहे, ह्याच्याकडे सरकार दुर्लक्ष करतंय, ही वस्तुस्थिती आहे। म्हणून मला आपल्याला या निमित्ताने एक विनंती करायची आहे की अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याच्या पाठीशी खंबीरपणाने उभं टाकणं हे सरकारचं काम आहे। कृषीप्रधान महाराष्ट्रामध्ये आजच्या ह्या पूर्ण 5 वर्षामध्ये जवळजवळ 3.25 लक्ष शेत जमीन ही पिकापासून वंचित आहे, कारण ती सगळी उद्योगासाठी वळवलेली आहे। अशा परिस्थितीमध्ये या राज्याचं क्षेत्रफळ घटलंय। या परिस्थितीत सुद्धा सरकारने काही गोष्टीवर विचार करणं आता ही काळाची गरज आहे। आज शेती जमिनी चव्हाण साहेब, मी एक तुमच्याकडे महत्त्वाच्या विषयावर बोलू इच्छितो की ह्या देशामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सरकारने काढली, पण ह्या पीक विमामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये भ्रष्टाचार होतो हे मी तुम्हाला ह्या ठिकाणी पुराव्यानिशी देतो। कारण माझ्या जिल्ह्यामध्ये महसुली जमीन नसताना जवळजवळ 11,221 शेतकऱ्यांनी बोगस पीक विमा उचललाय, ह्याच्यावर कुठलीही शासन कारवाई करत नाही आणि ज्या शेतकऱ्याला विमा मिळाला पाहिजे त्याला मिळत नाही। पण दुसऱ्या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांनी माझ्या जिल्ह्यातल्या जमिनीवर जिथं जमिनीच नाही अशा ठिकाणी पीक विमा उचलून सरकारचं ह्या ठिकाणी माझ्याजवळ पुराव्यानिशी यादी आहे, पूर्ण 11,221 शेतकऱ्याची बोगस यादी माझ्याजवळ उपस्थित आहे, मी आपल्या माध्यमातून सरकारला देऊ इच्छितो। त्याचबरोबर मी आपल्याला या ठिकाणी सांगेन की स्वामीनाथन आयोगाची लागू झाली पाहिजे। ज्यावेळेस भारतीय जनता पार्टी विरोधी पक्षात असताना सातत्यानं या ठिकाणी मागणी